Hi, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss a very important CSS question in a very fun way using our sharks and planktons and fishes, and the topic is CSS specificity. So if you have fetched two selectors, if you have written down two selectors and you're applying same styles over it, how CSS knows that which styles should be preferred over the other? And that's the whole concept of specificity, and we'll see it in detail in today's video. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, so we are here where we can see some planktons, where we can see some fishes, and sharks are also coming by as we progress through this video. So this is going to be a very fun video. Let's start. So specificity का मतलब क्या है? As I have already told you कि अगर आपने दो same styles apply किए हैं on different selectors, तो कौन से styles apply होंगे? What is the preference that CSS is going to give to that particular styles? उसी को deduce करना, उसी को calculate करना is specificity basically. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर की. सो यूनिवर्सल सेलेक्टर मीन्स आपने स्टार सेलेक्ट किया, जितने भी आपके एलिमेंट हैं आपके HTML में वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सभी के सभी पर आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. सो एज इन यूनिवर्सल सेलेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिसिटी. सो इफ यू कैन सी राइट हियर इट्स 0 0 0. So 0 refers to, this is what we are going to discuss, but it does not have any specificity in either of these columns. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, that's our div. So this is our plankton, and plankton is any element. So आपके कोई भी आपने डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल डिव्स हैं, डायरेक्टली li सेलेक्ट किया है, डायरेक्टली स्पैन सेलेक्ट किया है, pseudo elements भी इसमें काउंट हो जाते हैं. pseudo elements refers to that before after a selection that we use. सो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट किया है या कोई भी सूडो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, सो उसकी स्पेसिफिसिटी यहाँ पे कितना होगा? 1. सो अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है विच इज div, सो एज ऑफ नाउ वी जस्ट हैव वन प्लैंकटन विद अस, सो उसका स्पेसिफिसिटी यहाँ पर क्या हो गई? 1. सो दिस इज 0, दिस इज 0, बट थर्ड कॉलम जो है वो आपका 1 हो गया. सो जो थर्ड कॉलम है इट रेफर्स टू कि आपने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किया है या आपने कोई सूडो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, उस पर आपने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं. आई होप दैट्स क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टू एलिमेंट्स. नाउ वी हैव li, एंड इनसाइड li वी हैव ul. सो आपके पास दो एलिमेंट्स हो गए. एज यू कैन सी वी हैव टू प्लैंक्टन्स हियर. सो टू एलिमेंट्स मीन्स now these both of these elements are simple elements, so the specificity has been changed to 2. Similarly, if you have, like, let's say body, then div, then ul, then li, then p, then a, and all together you have 12 elements. But all of these are elements, no IDs, no classes, nothing like that. They are simple elements that you are directly fetching from the HTML. So if these are 12 planktons, that is 12 elements, then this is going to be 12. So now here your specificity is 0 0 12. I hope with the elements and with pseudo elements the specificity is clear. Now we move on to our class. We know that we can apply any class to any element, like div class equals my class. So now this div has a class. So we represent class by dot notation, as we know, dot my class. So now if you see that you are applying styles on some class, like you gave some element a class and now you are applying styles on a class, then here the middle column will be updated. So here you have one class. So class refers to a fish here. So planktons were elements or pseudo elements. Now our fishes are classes. So it can be class, a normal class. It can also be a pseudo class as well. Pseudo class is like we take first child, we take last child, we take first of type, nth of type. We have multiple pseudo classes. That's out of the scope of this question, but yeah, it also refers to the pseudo classes as well. So अगर आप कोई भी selector select करते हो which is a class or a pseudo class, तो जो आपका middle column है वो update हो जाएगा. So now here you can see one fish, that's we have only one class. So now you have 0 1 and 0. On third column it's 0 because you don't have any elements here.
Let's move on to the next one. Here you have star.myClass. So you know that star does not have any specificity. So you have one universal selector here and one fish, that is one class. So still your specificity will be 0, 1, 0. Now we have covered classes and your pseudo classes. But along with this, the middle column will be updated when you will fetch any type attributes, any attributes per se. So now if you can see input type equals checkbox, then this is a selector that you are trying to fetch and apply some styles over it. So this is an attribute selector. So in that case also your middle column will be updated. So here you just have one fish. So the fish can be class, pseudo class, or attribute selector. Your planktons can be elements and pseudo elements. So now we have one attribute selector, that is we have one fish. So for every fish, we will be updating our middle column. So here you have only of type. So only of type I was telling you, this is a pseudo class. Nth of type, only of type, first child, last child. All of these are pseudo classes which starts from this column. So it is a pseudo class and in this case also हम क्या update करेंगे? We will update our middle column. So इस तरीके से हम specificity provide कर रहे हैं. जितनी ज़्यादा जिसकी specificity होगी उतना ही उसको preference मिलेगी और eventually वही styles apply होंगे. Don't worry, we are going to see this in actual HTML document, but it's very important that you understand it through this. So now हमने अपना plankton discuss कर लिया. So plankton is element or pseudo element, and your fish can be class, your pseudo class, and your attribute selector. So in case of any fish आप middle column update करोगे. In case of any plankton आप last वाला column update करोगे. जितने भी planktons हैं उतना ही update करते रहोगे. Similarly जितने भी fishes हैं उतने update करते रहोगे. एक बार इसको हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर में. आई विल शेयर द लिंक फॉर दिस वेबसाइट ऑल्सो. बट यहाँ पे हम देखते हैं आईडीज, एज यू कैन सी क्लासेस, एट्रीब्यूट्स एंड सूडो क्लासेस. और लास्ट में आपके पास क्या आएंगे? एलिमेंट्स एंड सूडो एलिमेंट्स. लेट्स चेक. आई हैव रिटन डाउन दैट माई सेलेक्टर इज div. आई वॉन्ट टू अप्लाई सम स्टाइल्स ऑन div. सो यू कैन सी यहाँ पर अपडेट हो गया है 1. अब मैंने यहाँ पे लिया ul. So that's also an element. Inside that it's p, inside that's at a, inside that I have a span, inside that I have one another li. So आप जैसे जैसे elements provide करते जाओगे उतना ज़्यादा उसको preference मिलती जाएगी. So now if we check it for class, so आप देखोगे कि ये जो class है ये यहाँ पे इसका update हो गया 1. Type equals checkbox. So you can see it has been updated to 2. Only of type, so it can see it has been changed to 3. I hope that's clear. Now let's look at some other examples, very important ones. So now here you can see you have one plankton and one fish. That means you have one element and you have one class. So how is the specificity mentioned here? 0, 1 and 1. 1 for class and 1 for element. Coming on over here, you have one element and one attribute. So attribute also represents fish. So 0, 1 and 1. Again you have li and then you have nth of type. So nth of type is your pseudo class, which is one fish. You have li here, which is one plankton, and you have li at the end of this tilt as well. That's two elements. So two elements right here and one pseudo class. So this is the specificity, the total specificity of this selector. Then we move on to our form. Input type equals email. So you have two elements. So one is form, other is input, and you have one attribute selector, that's type equals email. So you have two elements. Let's go at the third column. You have one class, you have one fish, so your one in the middle will be updated. Similarly, here you can see li. So li means one plankton, class means one fish, nth of type is pseudo class, means another fish. So you have two fishes here. So middle column updated, and you have one plankton here. So that's your one last column updated.
Now we move on to our shark. So shark is which is given a lot of preference, a preference over all of what we have discussed as of now. So that's your div. So if you have applied any id selector, you have applied any id to a selector, and in your applying styles over it, it is given the utmost importance, utmost preference, and your first column will be updated here 100. Now here you can see you have two planktons. Which are the two planktons? You have li and you have a, and you have one shark, that's your div, and you have two fishes. Which are the two fishes? Your dot class and your href is the attribute selector. So you have two fishes, you have one shark, and you have two planktons. So how will it be updated? Shark for first column, fishes for second column, and two for planktons. That's your elements. So 1, 2, 2. This is how the preference will be given. So this is the total specificity of this selector basically. So अगर आप इसको किसी दूसरे सेलेक्टर से कंपेयर करोगे, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल यू आर कंपेयरिंग दिस सेलेक्टर विद दिस सेलेक्टर, और आपने इन दोनों सेलेक्टर्स में सेम कलर अप्लाई किया है, तो जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उस पे आपके स्टाइल्स अप्लाई होंगे. इन दिस केस इट्स 5 एंड इन दिस केस इट्स 3. सो जो भी आपने स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो आपके अप्लाई हो जाएंगे. अगेन यहाँ पे अब हमारे पास दो शार्क्स हैं. सो टू शार्क्स मीन्स यू हैव टू आईडीज and you have a one type selector, that is A. So you have one plankton, you have two sharks, so the total specificity is 3. So इस तरीके से आप specificity को समझ सकते हो in a very fun way. So for if we summarize this, so your planktons refers to elements and pseudo elements जो कि third column में जाते हैं. Then your fish represents your classes, your pseudo classes, and your attribute selectors जो कि second column में जाते हैं. And then your divs represent the sharks जो कि first column में जाते हैं, which is of very very important, which is given importance basically. अब अगर इन सभी क्लासेस को आपने अप्लाई किया है, सारे स्टाइल्स हैं, यू हैव इट विद यू, बट अगर आपने इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर दिया है किसी एलिमेंट पर, this is given the most importance. So this will be 0 0 0 and your 1 will be applied here, which is for inline styles. So if this is 1 right like this, then it will be given more importance, even though even before a shark, of course, because if you can see, a sheep is of course given more importance than shark. So shark cannot do anything to the people who are inside the ship, right? And finally we have important, which is a blast basically. So अगर आपने कुछ भी apply किया है, you are done everything, but now you have some styles at some place and you just want it to be applied, तो उस style के end में लिख दो important. तो कोई भी specificity कुछ भी mention या matter नहीं करेगा, जो भी आपने स्टाइल अप्लाई किए हैं वो स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे. सो सभी स्पेसिफिसिटी को ओवरराइड कर देगा आपका इम्पोर्टेंट कीवर्ड. सो इसको एक बार दोबारा से स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर में देखते हैं. तो अभी तक हमने क्लासेस देखे थे और लेकिन आईडी नहीं देखी थी. तो इफ यू हैव आईडी, सो आईडी अपडेट हो जाएगी. इफ यू हैव अ क्लास, सो क्लास में एक आ गया. इफ यू हैव दिस, it's 1. If you have this, it's 1. If you have, let's say, sorry, if you have P, that's this. अगर यहाँ पे दोबारा से some other ID, then you have 2, 1 and 3. So इस तरीके से आप specificity को कैलकुलेट कर सकते हो और अपने स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो. नाउ लेट्स चेक इट ऑन कोड पेन एक्चुअली हियर. सो नाउ आपके पास एक सेक्शन है जिसमें मैंने एक डिव बनाया है. इसको एक क्लास दिया है क्लास 2. आई एम अ डिव 1. और क्लास में मैंने क्या किया है, कलर ब्लू दिया है और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिया है. और अभी आईडी हमने यहाँ पे कुछ लिया नहीं है, बट यू जस्ट हैव आई एम अ डिव 1 and this is your class 2, and for class 2 the color is blue and the border is also blue. अब अगर मैं यहाँ पर नाउ मैंने सेम स्टाइल्स अप्लाई किए हैं अपनी आईडी के लिए भी. सो अगर मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया लाइक दैट, सो अब क्या होगा,
कि आईडी के जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर आपका एक एलिमेंट लिखूं और उसको कलर दूं पिंक, this is a div, लेकिन if you'll refresh it, so you will not be able to see pink. Why? Because सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? आईडी की. सो अगर मैंने आईडी यहाँ से हटा दिया, सो अब आपका जो है क्लासेस और डिव, अब क्लासेस और डिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? स्पेसिफिसिटी किसकी ज्यादा होगी? क्लास की. सो क्लास के जो सेम स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे. अब अगर मैंने यहाँ पे क्लास भी हटा दिया, तो अब इसके पास क्या मिलेगा? div. So अब अगर आप देखोगे तो div जो है, the styles in the div are applied और यहाँ पे क्या हो गया है? Color pink. अब now let's see, let's suppose that you have a class here, class 1, and you have another class, class 2. So अब इन दोनों की specificity basically same रहेगी. क्यों? क्योंकि वो दोनों classes हैं, right? एक class 2 है और एक class 1 है. यहाँ पर इसका कलर मैंने दिया है magenta and the border is also 2 pixel solid magenta. So the class 1 और class 2, लेकिन आप देख रहे हो कि जो class 2 के स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं. Why? Because अगर वो देखेगा कि स्पेसिफिसिटी सेम है दोनों की, तो वो देखेगा कि आपके CSS डॉक्यूमेंट में हाउ द हायरार्की इज बिल्ड. तो जो आपकी नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे हायरार्की में, वही स्टाइल्स अप्लाई होते जाएंगे. सो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के सेम थे स्पेसिफिसिटी. तो CSS डॉक्यूमेंट में हमने देखा तो क्लास 1 एंड क्लास 2 आर लाइक दिस. तो अगर आप क्लास 2 को ऊपर रख देते हैं और क्लास 1 को नीचे रख देते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं वो क्लास 1 के अप्लाई हो गए हैं. सो अगर आपकी स्पेसिफिसिटी सेम है, सो यू विल गो ऑन टू चेक कि CSS डॉक्यूमेंट में उनको किस तरीके से अलाइन किया हुआ है. नाउ लेट्स चेक अनदर वन, इनपुट. इनपुट में हमारे पास टाइप सेलेक्टर, जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात की थी, जिनकी स्पेसिफिसिटी 1 होती है. सो इफ आई गो लाइक हियर, this is a type 1. I've given it, let me remove this one. So this is your type equals text, color pink and border like that. आपने input यहाँ पर देखा which is of the color pink. अब अगर मैंने इसको class provide की which is class 1, so it will remain same. Why? Because class और type selector जो आपके attribute selector है, उन दोनों की specificity same है. So अगर आपको class 1 के styles यहाँ apply करने हैं, तो आपको class 1 को नीचे रखना पड़ेगा. बट अगर मैं यहाँ पे ID प्रोवाइड कर दूं, if I say it like ID equals ID, now ID has more specificity than your type selector. So ID में जो color green and border है वो आपके यहाँ अप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर अगर आपके पास एक लिस्ट है which is list items, it has 4 items basically. So आपने क्या किया है यहाँ पे li nth of type. So nth of type you know एक pseudo class है, और वो कहाँ पर जाते हैं? pseudo class is basically your fish, right? So क्या होगा? nth of type 2n. 2n refers to कि हर सेकंड एलिमेंट पे आपको, इस लिस्ट के हर सेकंड एलिमेंट पे आपको ये कलर अप्लाई करना है. एंड यू कैन सी कि वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. बट अगर मैं लेट्स से इस li को, जो सेकंड एलिमेंट है, इसको एक आईडी प्रोवाइड कर दूं, सो यहाँ पे इसने क्या मिला? आईडी हो गया. अब आईडी हैज मोर स्पेसिफिसिटी देन योर सूडो क्लासेस. सो यहाँ पे आईडी वाले जो आपके स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो गए. दैट्स बेसिकली इट. अब एक चीज और डिस्कस करते हैं, div एंड नॉट. सो div है, नॉट. सो नॉट की जो है अपने आप में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है. इट कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल कि व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ नॉट. सो नॉट की अपनी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, बट वट एवर यू अप्लाई इनसाइड नोट, इट हैज अ स्पेसिफिसिटी. सो विच इज कॉमन एज आपने क्या अप्लाई किया है. अगर आपने क्लास दी है तो क्लास की स्पेसिफिसिटी होगी, अगर आपने आईडी दी है तो आईडी के अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट होगी. सो इट सेज कि एवरी डिव जिस पे क्लास 2 अप्लाई नहीं हो रही है उसका कलर रेड कर दो. सो एवरी डिव जिस पर क्लास 2 अप्लाई नहीं हो रही है, सो लेट्स से मैंने इस डिव से क्लास 2 हटा दिया. सो यू कैन सी इसका जो कलर है वो रेड हो गया है. इंस्टेड ऑफ मे बी वी कैन
increase its font size so that you can see it clearly. So font size to make it 30 pixel. So you can see here. So अगर मैं यहाँ पर एक और div लगाऊं और उसको class provide करूं class 2, I am another div like that. Now this has a class 2. So now since this has a class 2, इसके ऊपर इसका जो font size है वो simple रहेगा because these styles will only be applied when the class is not class 2. So I hope this topic is clear. That's it for this video. And if you like this video, if you're finding value from these videos, please hit the like button and subscribe to my channel. Your one like encourages me to bring the content that's valuable to my audience. And thank you so much. I'll see you soon in my another video.